Hello, sir. How are Hey, you? how are you? Good to see you. Good. You're finally doing this? Absolutely, I'm finally doing this after a few push and pull. Let's go. Let's go. Come by it, please. And thank you so much for. When did you come in? Oh, it's been just about 2 weeks. Yeah, we are still kind of setting it up only. As each other. Good to have you here. Okay, HR finance option. Yeah, this is like the intro for us. Right? We have a lot of hubs. So this is like partial team. We have 400 members out here. Wow. Otherwise, most of our teams are out of hubs. The ops hubs with the bikes are and the bikes are. Awesome. So this is a new session in काश से आकाश where अभी तक हम बहुत सारे फाउंडर्स से मिले, बहुत सारे फाउंडर्स ने बताया स्टार्टअप कैसे बनता है, बट आई थिंक वन ऑफ द इंट्रीगिंग थिंग्स विच इंडिया नीड्स टू लर्न इज अबाउट इन्वेस्टिंग, कि इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, बिकॉज स्टार्टअप तो बन रहे हैं बट लोगों को इन्वेस्टिंग अभी भी समझ में नहीं आती. एंड फॉर दैट आई हैव गॉट वन ऑफ द पाइनियर्स जिन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, एंड ही इज अ ग्रेट फ्रेंड. ज्यादातर हम बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स में मिले हैं, पार्टीज में मिले हैं, गोवा में मिले हैं, सूरत में मिले हैं, बट इट वाज नेवर दैट वी कुड एक्चुअली सिट डाउन टुगेदर एंड हैव दिस चैट. इनफैक्ट ये मैं आपके साथ वैसे भी करना चाहता था. सो गुड टू हैव यू अपूर्व सर. राइट, थैंक यू सो मच आकाश. या वी हैव अपूर्व चमारिया विद अस. राइट, ही इज, आई थिंक इनके बारे में इन्हीं से सुनते हैं रादर देन मी टेलिंग. व्हाई डोंट यू शेयर योर जर्नी, राइट, कैसी रही है, क्या करते हैं आप, थोड़ा सा समझाइए. एंड हाउ डिड यू स्टम्बल ऑन स्टार्टअप इन्वेस्टिंग? श्योर. सो मैं इंग्लिश में बोलने वाला हूँ. या वी आर ओके विद व्हाटएवर लैंग्वेज दैट यू लाइक. मैं एक बहुत ही छोटे से टाउन कटिहार बिहार में पैदा हुआ. मोस्ट पीपल माइट नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट. एंड बिहार में उस समय एजुकेशन सिस्टम और अर्थव्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी. सो एक्सपोजर भी ज़्यादा नहीं था. इंटरनेट था नहीं, कंप्यूटर्स थे नहीं, क्लासेस कभी कभी होती थी. सो पेरेंट्स ने बोला बाहर भेजते हैं पढ़ने. सो पहला शिफ्ट हुआ जब मैं बिहार से बोर्डिंग स्कूल गया. बोर्डिंग स्कूल में एक्सपोजर मिला, पता चले बाहर के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, अलग अलग एक्सपोजर, कुछ ब्यूरोक्रेट की फैमिली से, कुछ बिजनेसमैन की फैमिली से. तो एक पता चलता है वाटर फाइंड इट्स लेवल, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे हो. अच्छा, आपका लेवल क्या है. श्योर. फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए दिल्ली आया. तो दिल्ली आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स इन इंडिया इफ नॉट द वर्ल्ड. व्हिच क्लास वाज दिस? दिस वाज इन ग्रेजुएशन, 12th के बाद. अच्छा, 12th के बाद. 12th के बाद दिल्ली अच्छा, आया. ग्रेजुएशन. ओके. एंड आई वुड डू पार्ट टाइम जॉब्स टू मेक एंड्स मीट. अच्छा, तो कभी कंपेयरिंग कर ली किसी कॉलेज फेस्ट में, कभी वो ट्रक्स के ऊपर चढ़ के प्रमोशन करते थे प्रोडक्ट्स के. व्हाट आर यू सेइंग? Yeah. कभी ऑटो एक्सपो में जाके किसी गाड़ी के सामने खड़े होके ब्रोशर्स बांटना, वो करना, सब कुछ किया. रिटेल स्टोर में काम करना. द इंटेंशन वाज टू अर्न एनफ मनी टू पे फॉर पॉकेट मनी, थोड़ी बहुत पार्टीज, मस्ती, ट्रैवल, सी इंडिया. बाइक पे काफी जगह ट्रैवल किया, घुमा. एंड अपॉर्चुनिटीज वेयर काश से आकाश. नाइस. सो एक स्मॉल टाउन से जब पहली बार दिल्ली आते हो तो सब कुछ अमेजिंग लगता है. ग्लिट्जी, मजा आ जाता है. मजा आ जाता है. यू हैव नेवर सीन दिस स्केल. तो स्केल देखा. उसके बाद बहुत ही जल्दी लाइफ में काम करना चालू कर दिया. सब तरह के काम, मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, किसी चीज में भी वॉलंटियर करना. कॉलेज में कोई कुछ भी बोलता है मैं ये कर रहा हूँ, हेल्प चाहिए तो मैं बोलता मैं कर रहा हूँ. Nice. मैं साथ में कर रहा हूँ. तो काफी कुछ सीखा. फिल्म एडिटिंग, कैमरा के पीछे शूट करना, एडिटिंग करना, कॉपी राइटिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग करना. In those times you were doing all this. Wow. तो I was a perpetual apprentice, permanent intern, Wow. free help for hire. अच्छा. तो अमेजिंग था. कभी ये नहीं था कि पैसे के लिए कुछ कर रहे हैं. We were playing to learn. Wow.
rather than playing to earn. Awesome. वो अलग किड़ा था, किक था, जज्बा था, वो किया. फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगा. Okay. एंड कोई प्लान नहीं था. आकाश की तरह कोई बड़ा यूनिकॉर्न बनाने का प्लान नहीं था. अरे सर. ऐसे ही कोई मिला, बोला कि हम एडवर्टाइजिंग में ये करते हैं, हाँ. तुम हरफन मौला टाइप के हो, तुम थोड़ा बहुत सब कुछ कर लेते हो, Wow. तो आ जाओ. अच्छा. एक ताश के पैक में एक जैक चाहिए होता है, Yes. which you can convert to any card. हाँ. So I entered the advertising agency as a all rounder. Wow. किसी चीज में भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत कर लेता था. Awesome. तो पहले कॉपी राइटिंग की, Yeah. फिर क्लाइंट सर्विसिंग में चला गया. तो पहला एक्सपोजर सेल्स का, हाँ. कि हाउ डू वी गेट क्लाइंट्स टू स्पेंड मोर, Yeah. राइट, Nice. बाय शेयरिंग इनसाइट्स, बाय शेयरिंग आइडियाज कि आपका ब्रांड ऐसे बन सकता है. दैट क्रिएटेड अ वेरी डीप फॉन्ड रिस्पेक्ट एंड लव फॉर मार्केटिंग इन मी. Wow. सो वो क्या, उसके बाद MBA किया. Oh, you did? हाँ, I Nice. did a MBA from IMI Delhi. अच्छा, nice. And I wanted to, थोड़ा क्रेज था उस समय हाँ. कि बाहर काम करना है, बाहर जाना है. हाँ. बिहार से आप दिल्ली आ गए, Right. फिर दिल्ली में आपने मूवीज देखनी चालू की. Yeah. प्रिया सिनेमा बड़ा होता था, तो हाँ, वहाँ हाँ. टॉम क्रूज की मूवी देखी. Wow. तो देखा कि यार यूएस में क्या नेक्स्ट लेवल स्केल है. Yeah. सिलिकॉन वैली के बारे में सुना. तो ना MBA स्कूल में मैंने बस ये देखा कि कौन सी कंपनी जो बाहर भेजेगी. तो रैनबैक्सी करके इंडिया में बड़ी मल्टीनेशनल होती थी. Right. तो वो लोग आए, वहाँ पे समर ट्रेनिंग की, PPO मिला. Oh, nice. हाँ, हाँ. फिर In marketing. हाँ, फिर रैनबैक्सी ज्वाइन की. हम्म. तो रैनबैक्सी में मेरा सिंपल था कि बाहर जाना है, हम्म. किसी भी कंट्री, कुछ डजंट मैटर. हम्म. इसलिए नहीं कि इंडिया अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कि थोड़ी दुनिया देख लेते हैं. हम्म. और मुझे लगता था ये कंपनीज अमेजिंग है, हम्म. पैसे देंगी काम करने के लिए, बाहर भी भेज रही है. Right. तो साउथ अफ्रीका में काम किया. हाँ. फिर टेक उस समय ना आ रहा था. Okay. तो ये कीड़ा था कि जब मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक कंट्री को मैनेज कर सकता हूँ, एक P&L मैनेज कर सकता हूँ विदाउट नोइंग इनफ अबाउट फार्मा. You're managing the country? Yeah, Wow. तो In how many years? 2.5 years. Amazing. That's a solid, bro. Yeah. So then था कि कुछ टेक में घुसना है. हाँ. तो I got a break in HCL. Okay. तो पेजेस, येलो पेजेस और इसको देख के मैं कॉल करता था हाँ. कंपनीज को. Sales. कोल्ड कॉलिंग. Sales. सेल्स नहीं, जॉब के लिए, Oh. टेक के लिए. Okay. तो मैंने बोला कि अच्छा. मुझे टेक में घुसना है. Wow. तो छोटी सी जगह बिहार से हो, तो ऐसा कुछ नहीं था कि इतना बड़ा नेटवर्क था, लोगों को जानता था. हाँ. तो येलो पेजेस आती थी, हाँ. तो वो पकड़ के फोन घुमाने चालू किया टेक कंपनीज को कि मुझे Tech नौकरी पे companies, रख लो. किसी ने नहीं बताया था कि कोई लिंक्डइन नहीं था, Wow. कोई हेडहंटर को नहीं जानता था. तो हाउ विल पीपल डिस्कवर यू. Yeah. तो मुझे लगता है लाइफ में कितनी बार जब आपको एक प्रोसेस नहीं पता होता है कि ये तरीका है करने का, Yes. तो आप कुछ ऑफ बीट कर लेते हो. Yes. तो योर इनएक्सपीरियंस इज द बिग एडवांटेज. Good one. I like that. Yeah. अगर आपको किसी ने बोला होता है कि एक इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग कंपनी बनाने के 10 स्टेप हैं, हाँ. तो शायद आप दूसरी तरह से कंपनी बनाते हैं. सही कह रहे हैं आप. आपने इतने जल्दी स्पैन में 5-6 साल में 15,000 बाइक्स ईवीज की कंपनी बना ली है. 20,000. 20,000. Yeah. And Akash is still out there. Yeah, absolutely. So Unlimited possibilities. unlimited possibilities. So my relative inexperience and not having mentors was a huge advantage. Wow. Because nobody told me कि this is the way to apply. Yeah. तो So you were failing, you were learning. You were failing, you were learning. Actually, the beauty is मेरे को realize नहीं हो रहा था कि I'm failing. हाँ. मजा आ रहा था. मजा आ रहा था. Nice. When you don't have a certain expectation, Yeah. I think you can be very fearless. Absolutely. And you can be very thick-skinned. And लोग फोन स्लैम करते थे, ढंग से बात नहीं करते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था. तो I ended up joining HCL, and HCL was an incredible experience. Wow. Possibly one of the best sales and marketing companies to work. Oh yeah, yeah. You were in Noida. I was in Noida, I was in London, I was in US. Oh wow. So before I knew it, 14 years had passed. Wow.
एंड मैं हमेशा बोलता हूँ 14 ईयर्स में मैंने 10 जॉब्स किए, अच्छा, क्योंकि कुछ भी मुझे करने मिलता था तो मैं 1-1.5 साल में जी जान लगा देता था. वाओ, Bring your A game 200% of the time, अमेजिंग. 24/7. मैरिड नहीं था, फिर शादी भी हुई, बट वर्क वाज अ पैशन. हाँ, नई अपॉर्चुनिटी मुझे दे दो बस. फर्स्ट टू एंटर, लास्ट टू एग्जिट, always on, 24/7, वाओ, 365 days. अमेजिंग. I just love what I do. So people saw that. So many years I got promoted twice, Wow. which is very rare. I think even now. Yeah, it is very Yeah. rare. And I grew very fast. I was the youngest general manager. Then I became the youngest VP. And हर 1.5 साल में मैं जाके ये बोलता, can I do more work? मैं ये जाके नहीं बोलता can I get more money? Yeah. हमेशा जाके बोलता can I do more work? तो I kept getting incremental responsibilities, additional responsibilities. Ran a business development team in US. M&A पे काम किया. Last role I was heading corporate marketing. Oh wow. So बहुत हमने अमेजिंग काम किए. मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप की. Wow. वर्ल्ड का लार्जेस्ट फुटबॉल क्लब. Amazing, amazing. Man U is like a dream for many, Absolutely. and you worked with them. Wow. So हमेशा ये रहता था कि how do we create an Indian brand Yes. where around the world there is recognition, respect and love and affinity. Yeah. And there are no shortcuts to it. True. You need everybody in the team to think big, execute big, and just be fearless. Yeah. Yeah. We always thought कि कोई भी हमें platter पे नहीं देगा. Yes. We always thought कि we will go out and grab market share. We entered continental Europe when I was there. We won a lot of large customers. So by the time I was 30, 32, I was running a very large team. एक बहुत अच्छा सा, आकाश की तरह एक अच्छा सा ऑफिस था. Wow. बाहर से Touchwood ये नया है. टचवुड. Yeah. बाहर से गोल्फ कोर्स दिखता था. हाँ. जनरली व्हेन यू आर यंग और आपके ऑफिस से बाहर गोल्फ कोर्स दिखता है और बड़ा सा ऑफिस है, एक तरफ सोफा है, एक तरफ बैठने, एक तरफ लार्ज टीवी लगा है, बाहर आपकी टीम बैठी है, तो आपको लगता है यू अराइव्ड. You arrived. Yeah. मुझे डिप्रेशन सा होने लगा. मुझे ये लगा कि ये किस तरह की चीजें हैं. एंड पूरे दिन आप मीटिंग्स कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो. I wanted to move back to being an operator and creator. Wow. Because बड़े कंपनीज में ना एक सर्टेन सीनियरिटी के बाद आपका काम होता है टाउन हॉल्स करना, लोगों से मिलना, एग्जीक्यूटिव अलाइनमेंट करना. करेक्ट. तो स्लीव्स फोल्ड करके ऑपरेटर बनने की इच्छा थी वापस. वाओ. तो मैं वीसीज से मिलने लगा. सेक्वाया से मिला, लाइट स्पीड से मिला. मैं उनसे पूछने लगा कि तुम्हारी कौन सी कंपनीज है जहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ. नाइस. छोटी कंपनीज बताओ. मुझे लोग पूछते कि यार आप इतना अच्छा कर रहे हो, क्यों छोड़ना चाहते हो? और मेरा आंसर होता मैं अच्छा कर रहा हूँ इसलिए छोड़ना चाहता हूँ. वाओ. तो मार्केट में आई थिंक लोग सोचने लगे कि यार ये कोई सरफेरा घूम रहा है मार्केट में. तुम्हारे पास आया था ये बोल रहा है मैं कंपनी इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि मैं 32 में वीपी बन गया हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ. तो I wanted to reset the clock. I wanted it to be day zero again. चैलेंज दो मुझे. चैलेंज दो. वाओ. तो मल्टीपल मिला कंपनी से. टेक बिजनेस में रहना चाहता था. सो भानु से मिला, किसी उनके इन्वेस्टर ने मुझे भानु से मिलवाया. रेडगेन के फाउंडर है भानु चोपड़ा. राइट. सो मुझे बहुत अच्छे लगे. हाँ. और मुझे कंपनी में बहुत पोटेंशियल लगा. सो मैंने रेडगेन ज्वाइन किया एज चीफ रेवेन्यू ऑफिसर. सो कंपनी 15-16 मिलियन की कंपनी थी. एंड ठीक थी, अच्छी चल रही थी, 10-15% ग्रोथ थी. हमारा ड्रीम था कि इसको बड़ी करते हैं, 100 मिलियन की कंपनी करते हैं 3-4 साल में. 2-3 ही कंपनीज थी सास की उस समय जो 100 मिलियन के ऊपर थी. फ्रेशवर्क्स थी, जोहो थी, राइट. शायद तीसरी भी नहीं थी. यही दो हैं. यही दोनों थी उस समय. तो 3 साल में हमने कंपनी को
80 मिलियन कर दिया. Wow. सो बहुत अच्छी टीम बनाई. रेडगेन का झंडा 200 कंट्रीज में गाड़ दिया. कस्टमर्स, फंड रेजिंग की. कोविड आ गई फिर. Okay. सो कोविड बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. सबके लिए. आई थिंक एवरीबडी वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ Yeah. इमेंस पर्सनल ग्रोथ, Yes. either because of unhappiness and calamity, Hmm. or because of discovering joys like personal fitness, True. time to read, True. focusing on eating clean. दुख और सुख दोनों के कारण कोविड में बहुत पर्सनल डिस्कवरी रही. Yes. सो उसके बाद रेडगेन के बाद मैंने 1 साल टेक महिंद्रा में काम किया. Hmm. सीईओ के साथ बहुत क्लोजली उनके क्लाउड बिजनेस को रन किया, Hmm. स्ट्रेटजी रन की, Hmm. स्टार्टअप इन्वेस्टिंग रन किया. For Mahindra. या Okay. 2012 से जब मैं यूएस से लौटा 2012 से इंडिया, Hmm. तो इंडिया में मुश्किल से 10-15 फंड थे, Hmm. 15-20 इन्वेस्टर्स थे. Yeah. बिकॉज मैं हाई एनर्जी हूँ, ड्रीमर हूँ, मेरी हमेशा एफिनिटी फाउंडर से ज्यादा रही है Hmm. और कॉर्पोरेट एग्जेक से रिलेटिवली कम रही है. Okay. सो आई स्टार्टेड फर्स्ट बाय जस्ट हेल्पिंग देम. Sure. किसी ने बोला मुझे ये कंट्री में एक्सपैंड करना है, कैसे करूँ, हेल्प करते हैं. किसी ने बोला कि फंड रेज कर रहे हैं, हेल्प कीजिए, थोड़ा हेल्प किया. Nice. So I've always considered myself as an operator investor, Hmm. not as an investor operator. Got it. So as an operator who's built companies, Hmm. who's run teams, products, growth, it brings a very different perspective. Yeah. Actually, we can walk in the founder's shoe. Hmm. We know how hard it is, how lonely it is. Hmm. It's a sinusoidal curve. How founders, even it's a very tough time. Team ke samne you have to be upbeat and you have to say, everything is fine, Yeah. all is well, right? So True. I think when you have operated companies, you bring that experience and that very deep sense of empathy for founders. Hmm. That helps Yeah. as an investor. Yeah. So then you ended up investing personally. Yes, from matlab 2012. Yeah. 2012, you started investing in yeah. startups at that time. Yeah. After coming back to Yes. India and working for RateGain, you started. Yeah. हैं? 2018, Wow. I joined RateGain. अच्छा तब join किया था Yeah, आपने yeah, RateGain. yeah. Wow. So I think you were one of those very early investors who found that startups is gonna be the next big thing. And you started investing at that time and people didn't even know startups, right? Actually, Very few investors. Very were few there. investors. Right. Actually, the reason for investing in startups or working with promoters was not because it's going to be the next big thing. Hmm. It was purely I enjoy doing it. Yeah. So I think जैसे आप art खरीदते हो, Hmm. you can buy art because you feel it will appreciate, Right. or you can buy art thinking I will really enjoy looking at it every day. Yeah. The way I look at startups is if I invest in a company or if I support any founder, hopefully we'll make it a work of art and we'll enjoy looking at it, and exit is secondary. Beautiful point. Yeah. We should enjoy the whole process of creating it, enjoy building it. Just, when I see Zip, I'm not an investor in Zip, but when I see a Zip buying going around, I personally feel very happy and delighted. So ये जो feeling है when you see builders building companies, right, and you see a child growing up, and the world taking recognition of the child, true. the child becoming an adult, a large company, and then becoming a statesman-like company. Yeah. So you are an elderly statesman in the ecosystem now. True. Other young companies are looking at companies like Zip. Yeah. That journey itself is the reward. That's true. That's so true. Yeah. And being an investor and operator like you are, I am seeing only one company. You can see multiple childs around you. We see. Yeah, you have children. Right? We are privileged to, fortunately spend time, learn from amazing founders like you, different perspectives. And beauty of it is, for you, this is 24/7. Yeah. You're very deep. Yeah.
like a buffet, we are able to sample different startups, different industries, and cross-pollinate ideas. Yeah. What can a hyper-local grocery delivery company learn from a company like Zip? True. Or vice versa. Yeah. What can a EV financing companies learn? Like you remember, Beach I had reached out to you to understand your P&L. Yeah. So I think these are incredible opportunities. Lot of opportunities. Yeah, और वो तभी आती है मेरे हिसाब से when you are part of that ecosystem. Yeah, part of that When you've invested in a grocery company, you would talk 10 Yeah. things around it. When EV company, you'll talk 10 things around. Absolutely. So you become an SME yourself, Yeah. being an investor. I think that's a very different approach that you've talked of. Maybe जहाँ पे जो angel investors की हम बात करते हैं, वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि transaction है. Yeah. It's an asset class. Yeah. मैं invest कर देता हूँ startup में, पैसे बनेंगे तो ठीक है. Obviously, the intent is to make money. But I think your lens is a lot different, and I think मतलब जो आप ये बताओ, जैसे there is someone who's sitting in Surat, there's someone who's sitting in Chennai. He has a lot of money, but he is a businessman. He's built his business. और जो thought है of a lala or a businessman is कि मैं invest तभी करूंगा जब मुझे clear return दिख रहे हैं. हाँ. और startup में नहीं दिखते. हाँ. जब आपने 2-3 अपने 1-2 startups अगर आप रेफर कर सकते हो जिनमें आपने इन्वेस्ट किया होगा, आपने ऐसा क्या देखा उसमें कि यार मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, इट्स अ लीप ऑफ फेथ. इट्स एनीवेज अ लीप ऑफ फेथ, राइट? Yes, yes. व्हाट आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू लुक्ड एट एंड यू एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन दोस अर्ली डेज? आज तो बहुत मैच्योर हो गया मेरे हिसाब से. फाउंडर्स को भी पता है यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होती है, धंधा क्या होता है. बट फिर आई वुड लव टू नो योर पर्सपेक्टिव. व्हाट डू यू लुक एट व्हेन यू इन्वेस्ट? So I'll give you some examples. So I was one of the first investors in a company called Witty Feed, which became Stage. Yeah. Stage. विनय. Yeah. हाँ. So विनय से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला, विनय ने मुझे बोला मैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट वायरल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ. हाँ. तो मैंने विनय से पूछा, अच्छा ये तो कंपनी के बारे में है, तुम खुद क्या करना चाहते हो? हाँ. तो विनय ने बोला, यार ये किस तरह का क्वेश्चन है? मैंने बोला, हाँ बट पर्सनल एस्पिरेशन क्या है? तो विनय ने बोला, मैं इंडिया का एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ. ओह वाओ. वेरी कॉन्फिडेंटली, हम्बली अच्छा. एंड नाइसली. हाँ. तो द फर्स्ट थिंग आई लुक फॉर इन फाउंडर्स इज कितना बड़ा एस्पिरेशन है. Yeah. I would prefer founders to win big than succeed small. That's right. Very big one. Right? Because we are basically backing dreamers to build generational companies, Yeah. to create institutions, to fundamentally provide better products and services to a new emerging class of consumers. So, bada dream. The bigger, the better. Wow. Also, dream should not be very realistic at early stage. Acha. So, one of my favorite philosopher, Rumi, says, the path will appear when you walk. Okay. Yeah. So, अगर आपको आज पता है कि आपको 20,000 गाड़ियों से 1 लाख गाड़ी कैसे जाना है, तो वो ड्रीम नहीं है, वो अचीवेबल प्लान है. सही बात है. सही बात है. If your dream becomes, whether it is with rider vehicles or riderless vehicles, every second packet in the world will move on Zip. Yeah. I don't know how. That's our dream. That's a dream. So dream और plan में ये फर्क होता है. So first thing we look for is, I personally look for is, do they have an incredible goosebump giving dream? कि मजा आएगा इस जर्नी में. पार्टनर करके ना आकाश विनय के साथ मजा आएगा. It's the ride of a lifetime. Yeah. I want to go on long rides. Nice. Second thing, are you a talent magnet? शुरू में और later on also, there will always be companies which are bigger than you, better brands, better offices. Most people forget that employees don't work for better food or better offices. The best employees work because they want to feel alive. Yeah, that's right. They want कि मेरे को कुछ सीखने मिला. I got respect. मुझे autonomy मिली execute करने में. Somebody made me feel important, loved, respected.
I was trusted in the company. So second thing I look for is this a founder who will inspire respect, whom people will walk to the end of the earth with? Nice. स्टार्टअप बनाना बहुत सालों की Yeah. Commitment. इंटेंस लड़ाई है, बिल्कुल. इंटेंस लड़ाई है. हाँ हाँ. अभी आपने सीरीज बी रेज किया, कल सीरीज सी रेज ही नहीं हो पा रहा है. Yeah. बहुत तरह की चीजें होती है, रेगुलेटरी इशू, लीगल इशू, मार्केट शेयर इशू, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई. डू यू हैव अ फाउंडर जो सामने खड़ा होता है तो 100 लोग पीछे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार इनके साथ हम कहीं भी जाएंगे, डजंट मैटर, ये बिजनेस चेंज कर लेंगे तो हम भी इनके साथ बनाएंगे. तो इज द फाउंडर अ टैलेंट मैग्नेट? परफेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है व्हाट डू पीपल से अबाउट द फाउंडर व्हेन ही इज नॉट इन द रूम. ओह नाइस. और द फाउंडर्स, या राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. थर्ड चीज इंपॉर्टेंट होती है, कैन दे थिंक थ्रू एग्जीक्यूशन. या सो जब आप डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, 4 टाइम्स जब आप डेप्थ में जाते हो, have they built this plan sitting in an air conditioned office in a nice Starbucks sipping coffee कि nails के नीचे dirt है, sleeves folded है, काम क्या है? मैंने आपकी पहली फोटो देखी घुसने के साथ लॉन्च पे, you were on a small bike yourself wearing a helmet. Yeah. I still see photos at times you do deliveries, आपका देखता हूँ. Correct. I love that. सचिन और इनकी बहुत फेमस स्टोरी है फ्लिपकार्ट की कि they used to deliver. They used to deliver, yeah. Amazon के बारे में लोग बोलते हैं अभी भी, if a mail goes to Jeff Bezos, he replies. ये कस्टमर सेंट्रिसिटी और जो फाउंडर एग्जीक्यूशन के डेप्थ में है. There is no easy way to build a startup. There is no glamorous easy way. True. हम सबकी एक लाइफ ग्लैमरस है, पॉडकास्ट में होना, ये करना. सही बात. बट जैसे ये पॉडकास्ट बंद होगा, आकाश आज के नंबर्स, क्या डिलीवरी हुई, क्या हुआ, एक्शन इज ऑन. एक्शन इज ऑन. आई नो. तो आई लव फाउंडर्स हु कैन गेट इनटू डेप्थ. हार्डवेयर बना रहे हो तो कैन यू टेक अ स्क्रू, नट, बोल्ट, ओपन इट सर्किट पे. अगर आप लॉजिस्टिक्स ऑपरेशनल स्टार्टअप कर रहे हो बट आपको ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, रूट ऑप्टिमाइजेशन, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर आपकी टीम में नहीं है तो बनाना मुश्किल. बिल्कुल. सो दे हैव टू बी इनहेरेंटली क्यूरियस. जब हम किसी अर्ली स्टेज फाउंडर से मिलते हैं, डिड दे टेल मी समथिंग व्हिच आई डिडंट नो? नाइस. डिड दे गिव मी अ यूरेका मोमेंट इन द पिच एंड आई वाज लाइक वाओ. Yeah, right? Yeah. Did they blow my mind? वो बहुत important होता है. And then last stage, which is more a personal value, is the deep sense of humility and integrity. Very, very critical. How respectful are you? Incredible founders हैं. जैसे मेरे एक बहुत अच्छे friend बने जिनकी कंपनी में मैं इन्वेस्टर था, रितेश मलिक. हाँ, Innovate. तो I was one of the early investors in his company. Oh wow. रितेश से बहुत सीखने को मिलता है. सुपर हम्बल, डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस. तो कितने फाउंडर्स हैं? तो मुझे लगता है कि इन अ वे द इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ गुरु दक्षिणा टू द फाउंडर्स फॉर टीचिंग अस. यू आर सपोर्टिंग, पैटिंग बैक, और वो उसकी जर्नी का बहुत जरूरत है. सो आई ऑलवेज से कि आई वांट टू बी द फाउंडर्स 2 AM फ्रेंड. वाओ. कि रात को जब आप थके हुए हो, आप परेशान हो, आपको कोई आइडिया चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एट टाइम्स यू जस्ट नीड समवन टू लिसन टू. यू शुड बी एबल टू कॉल मी विदाउट fearing that I'll be judgmental or harsh or. Nice. That's an amazing perspective. I think a lot of people should be like Apurv as the investor, जो कि founder से ये नहीं पूछ रहा भाई क्या हो रहा है, but अगर problem है तो I'm there. Because problem होगी. 100%, that you've understood. 100%. मैं तो इनफैक्ट अपने सारे पोर्टफोलियो कंपनीज को बोलता हूँ, मेक हेस्ट स्लोली. अगर जनरेशनल कंपनी बनानी है, 1-2 साल आगे पीछे, 1-2 क्वार्टर में कुछ नहीं चलेगा. इट्स ओके. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक आउट टाइम. यू आर नेवर गोइंग टू बी 23 अगेन. टेक आउट टाइम टू गो फॉर अ रोड ट्रिप, वाओ, गो फॉर अ मूवी.
कोई बात नहीं यार, 40% की जगह 30% ग्रोथ होगी एक क्वार्टर, बट यू विल नेवर बी 23 अगेन. Very important to pace. It's a marathon. Building an amazing sustainable company is not a sprint. Sprint में आप भाग लोगे, shortcuts लोगे, कुछ गड़बड़ होगा. This is your company. As an investor, I want you to have the largest ownership when you IPO. I want you to be the healthiest. I want you to be the happiest. I want you to be the fittest. That's my dream. Wow. Amazing. I think you are yourself almost like an entrepreneur. मुझे ऐसा लगता है. The way that you've expressed your journey. मतलब I can relate a lot कि यार एयरटेल में when I was working, I need the best job. I will fight हर 1.5 साल में एक नई 0 to 1 अपॉर्चुनिटी करने में इतना मजा आता था और टाइम की कोई परवाह ही नहीं. टाइम की परवाह नहीं. राइट. जुनून था, सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो छोटा सा रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा उसके लिए लगे रहते थे. बट डोंट यू थिंक दैट आजकल की जनरेशन थोड़ी बदल गई है? Have you seen that change or people are still the same or something is changing around us? मुझे तो आजकल की जनरेशन incredible लगती है. Wow. Some of these companies when I had invested, I started investing in 2012. Every next year the generation is far more driven, more serious, more aware. I know when I was at Akash's age, I was clueless. Now I look at Akash, he's raised such a large Series B, he's running such a successful company. He retains his niceness and humility. It is inspirational. It is inspirational and I feel incredible. I look at my daughter who's 4 years now. Oh wow. Yeah. Far smarter. So every next generation takes the game a level up. Everything. Yeah. So I don't think we have seen a more ambitious bunch of Indian entrepreneurs as we have now. Yeah. No, that सब बोलता है कि यार झंडा गाड़ना है हर जगह. Yeah. And people are working hard, people are delivering, people are passionate, people are knowledgeable. I know there is this whole narrative around आजकल की generation ऐसी है वैसी है. मुझे तो लगता है incredible है. And the reason why India will become a 10 trillion economy is because of today's generation. Wow. This is the generation. This is the generation. This is the moment of India. This is the moment of India. Yeah. So, phenomenal builders. छोटी जगह सूरत में जाओ, you meet amazing founders. कोयम्बटूर में, right. भोपाल में, हर जगह. मैं पटना था. I was in Patna last week. Yeah. For an event. Okay. Amazing. कोई माइक्रो ड्रोन स्टार्टअप बना रहा है. अच्छा. Wow. Everybody was well dressed, well spoken. You could have been in Bangalore. Yeah. That's true. You felt like that. Patna is almost. B-Hub बनाया है, which is बिहार का accelerator. B-Hub. World class. क्या बात है. So you feel कि there is so much. You don't need to necessarily stay in Delhi, Gurgaon, Bombay to build a startup. Right. You can in a very cost efficient manner build it out of a Patna, Bhopal, Indore. Amazing. Many functions. जैसे आप राइड हेलिंग हो. Your team can be here which is doing ops. Yeah. But back office functions can be in Indore, Bhopal. सही बात है. क्यों नहीं? सही बात. Quality of life better है, cost कम है. Distances कम है, traffic कम है. Cost बहुत कम है. Yeah, makes sense. एक बात बताओ जो मतलब ये आपने बहुत अच्छी बात बोली because you have spent almost 6-7 years now investing. But people are still not there. Yeah. People having a lot of money. How do they start their investing journey? उनको कहाँ से ढूंढे वो स्टार्टअप? आजकल शार्क टैंक का टाइम चल रहा है, लोग देख तो रहे हैं, बट अभी भी जैसे मैं जयपुर जाता हूँ, राइट? माय अंकल्स वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, जयपुर क्लब और इन सब में बहुत लोग आते हैं, बट अभी भी वो कहीं ना कहीं अटक रहे हैं कि हमें स्टार्टअप नहीं समझ में आता. आप उनको क्या कहना चाहोगे? हाउ डू दे मेक देयर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट? वेयर डू दे फाइंड दैट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट? तो मुझे लगता है कि whether it is startup investing या public market investing, 2 तरीके होते हैं. एक होता है म्यूचुअल फंड तरीका. हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड में म्यूचुअल फंड का इक्विवेलेंट इज अ फंड. तो आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट मैनेजर पे ट्रस्ट कर रहे हो, उसकी थीसिस पे ट्रस्ट कर रहे हो कि आप सीरीज बी फंड हो, आपका प्रीवियस फंड रिकॉर्ड ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
पे फोकस्ड फंड हो, एनर्जी ट्रांजिशन पे, मुझे लग रहा है ये थीम बड़ी है, ओके तो आप एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को बैक करते हो. द इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्ट. अगर कैट 1 फंड है 25 लाख ओवर 5 years इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. कैट 2 कैट 3 में 1 crore इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. एंड आप ऊपर भी कर सकते हो. दिस इज द म्यूचुअल फंड अप्रोच. अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, नाइस, एक्सपर्टीज नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू डू इट. दूसरा इज द स्टॉक पिकिंग अप्रोच, जो पब्लिक मार्केट में भी होता है. इसमें क्या होता है, आप पढ़िए, कंपनीज को फॉलो कीजिए, वीसीज को फॉलो कीजिए, इवेंट्स के लिए जाइए. टाई के बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं, एक्सेलरेटर्स के इवेंट होते हैं, पिच डेज अटेंड कीजिए एंजल फंड्स के. यस, मिलिए कंपनीज से. आकाश से मैं पहली बार बॉम्बे में मिला था, एक ऐसे पिच डे में मिला था. Yeah, I remember. ऐसे And pitch you day had में. given such an amazing session that day. Thank you. I was moved, yeah. तो everything does not need to lead to a relationship or an investment. सही बात है. Zip led to a friendship. Yeah, absolutely. तो जब आप बहुत लोगों से मिलेंगे, सीखेंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कौन सी स्टार्टअप कैसी है. Yeah. समझ में आएगा तो आप अपनी पहली गलतियां करोगे. सही बात है. कॉस्ट ऑफ लर्निंग है. हाँ. यू विल इन्वेस्ट, सम विल वर्क, सम विल नॉट वर्क आउट. जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, क्यों इन्वेस्ट किया, एक डिसिप्लिन तरीके से एक इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखो एक पेज की. खुद की होनी चाहिए. खुद की होनी चाहिए, अपने लिए लिखो. सही है. क्या अच्छा लगा था, क्या assumptions थे. जब चलेगी तब भी उसको वापस देखो कि क्या लिखा था, did that work out or not. जब नहीं चलेगी तब भी करो. Very nice. तो धीरे धीरे आप एक परिपक्व क्वालिफाइड इन्वेस्टर बनने लग जाते हो. Very nice. Wow. This is an amazing way for people to learn. I think this is almost like a masterclass in investing. I hope after this podcast, a lot more new investors should come out from the Patnas, Absolutely. And Jaipurs and Absolutely. Surats of the world, right? Which they are anyways. Absolutely. आप उस एक कॉलेज या स्कूल में जो बच्चा जो आज की डेट में चाहता है स्टार्टअप करना, राइट, एंड आई सी दैट एनर्जी क्रेजीली. अभी मैं एक शादी में गया था, देयर वाज अ 10-year kid who pitched me high sharks. This is my pitch. You won't believe, right? तो इस तरह का चल रहा है. बट आप उनको क्या बताना चाहोगे? What are there any sectors that they should focus on? Anything that they should do right now in college or school so that they are ready to build their startup? I would say start building. I'll give you an example. The first startup which I did was in school, when I used to trade and sell and buy comic books. Or comic books. Comic books. Nice. तो सुपर कमांडो, ध्रुव, नागराज, जिनकी कॉमिक्स आती थी, खुद के पढ़ने के लिए खरीदता था और फिर एक लाइब्रेरी रन करता था where people would pay and read. क्या बात है. छोटा सा स्टार्टअप था, but it teaches you how to price a product, how to create a value proposition, how do you do price discovery, कितने लोग पे करेंगे, how do you do collection. हाँ, पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसी ने कॉमिक रख ली आपकी. हाउ डू यू एडवर्टाइज, ऊपर की क्लासेस में भी बेचो, नीचे में भी. हाउ डू यू कीप द इन्वेंट्री ऑफ ऑल द कॉमिक्स. पहले सब पे नंबर लगा के एक रजिस्टर में लिखना. तो काफी कुछ आप सीखते हो. वेदर यू आर 5 years old, आप स्कूल में एक लेमनेड का स्टॉल लगा सकते हो, 1-1 रुपए में एक ग्लास नींबू पानी बेच सकते हो. The only way to be a builder is to build. बिल्डिंग करने से जो नॉलेज आती है ना, ऑपरेशंस करने से, चीजों को बनाने से, लाइफ लॉन्ग नॉलेज है. वाओ. तो स्टार्ट अर्ली. स्टार्ट अर्ली. बी फेयरलेस. बी फेयरलेस. बनाओ. कुछ भी करो. घर पे हासिल करो. पेरेंट्स का काम करके मनी लो. स्टॉक इन्वेस्टिंग करो. आप एलिजिबल नहीं हो तो पेरेंट्स के अकाउंट में बोलो इतने पैसे मैं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कहाँ डालना है. मैंने पॉकेट मनी अर्न किया है. लर्न हाउ टू रीड अ P&L. लर्न अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. और आई थिंक ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टीच आवर यंग फ्रेंड्स
how to build, how to manage money, Hmm. how to build trust, how to negotiate, Yeah. Yeah. how to lead very authentic lives. Yes. 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 Not the fancy real life, but करो 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 कूदो करो fail करो कूदो फेल करो, hustle करना जरूरी है, right? हसल करना जरूरी Yeah, है. yeah, and that is what you did all And your enjoy life. the hustle. Enjoy that. It should never be a grind. हाँ, ये नहीं कि मैं हसल के लिए हसल कर रहा हूँ, नहीं. It The should day be. it becomes a grind, हाँ, you're in the wrong lane. yeah. अगर आप 8 बजे तक बैठे हो या 5 बजे काम कर रहे हो या कुछ भी, Hmm. do it because you're enjoying it. Yeah. Do it because it is making you feel alive. Yeah. Do it because there is nothing else in the world you would be doing. Right. 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 Makes sense. Makes sense. Find what you enjoy and let it consume you. Yeah. 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 Correct. उसमें मशगूल हो जाओ, बस भूल जाओ बाकी सब. भूल जाओ बाकी Yeah, सब. yeah. It should be Absolutely. self driven. Absolutely. आपने एक और चीज करी है. Can you share the number of startups that you've invested in? मोटा मोटा. Too many to count. Too many to comment. Too many to count. And if you can share that, what is the percentage that would have now shut down? I've been very fortunate. Wow. Maybe 3.5, 4%. That's all. Yeah. Over 100 plus startups, maybe 3-4. Wow. That's a crazy success ratio. Very good exits, been very fortunate. Hmm. In fact, somebody called me and said, सर आपने इतने साल पहले इन्वेस्ट किया था, Hmm. XYZ X हो गया है आपका, Hmm. Nice. आप चाहेंगे एग्जिट लेना? Hmm. मैंने बोला if it helps you, I'll take it. Hmm. Otherwise, this gives us a chance to stay in touch. Yeah. Yeah. That's right. I'm very fond of you. He said, I'm also very fond of you, sir. Hmm. So I would love for you to continue. We just decided to continue. Wow, very nice. I had the same conversation yesterday. One of my early investors, we had sent a letter for preemptive, Yeah. and he said, "यार मेरे को तो आपके साथ IPO की बेल बजानी है, मैं रहूँगा इसमें." And those are, I think, emotion. Absolutely, emotion. It's an emotion, yeah, because they feel connected. कि यार day one से हैं तो पैसे के लिए नहीं कर रहे. The only reasons where at times I have taken an exit is because now the founder is doing something else. Correct. I was excited about what they were building originally. Yeah. अब उनका mission change हो गया है. It's still an incredible mission. Yeah. But that's not the mission which I had bought into. It's true. Which is your own reasons that you would exit, but I think this is super amazing. तो but एक चीज जो नहीं हो रही है, which is I think, can you explain the process of a high-paid employee in, let's say, a Microsoft or anywhere, right, or any company or an HCL, let's say in your case, and he now wants to build a fund, right? ये भी हो सकता है क्या मैं एक अच्छी सैलरी पे अगर हूं तो क्या मैं कुछ लोग मिलके एक फंड बना सकता हूं? So while being an employee आप फंड नहीं बना सकते. Okay. But you can invest. अच्छा. Small amounts so that it's not a meaningful part of your wealth. The moment it is meaningful, you should declare, you should get approvals from your company. Right. Meaningful in some companies is more than 5% of your net worth. Sure. So, ये rule इसलिए होता है कि अगर आप किसी कंपनी में हैं, you should not be able to feel biased about your portfolio when it comes to the company's business with, the startup's business with your company. Yeah. That said, there are many execs who quit, who either become founders. So Google से बहुत लोग founders बने हैं, who become CEOs of other companies or who become fund managers. Oh, right. Yeah. They have, yeah. But कुछ भी करने के पहले baby steps लीजिए, सीखिए. It has to come organically through a lifelong learning. कोई shortcut नहीं है. Imagine आपने कभी invest नहीं किया है, कभी startup बनाया नहीं है, आप suddenly you've become a fund manager. It's very hard for people to then trust you with their own money. That's true. That's true. Yeah, because it's a full-time job then. Yeah, and building a fund is a commitment because you are raising funds. You're raising fund. You're deploying. Having someone else's capital. Yeah. तो वो responsibility अगर Huge responsibility. Yeah. But आप कह रहे हो कि अगर आपको investing करनी है तो या तो आप stock market की तरह startups को ढूंढो, invest करो, और funds में डाल दो. Funds में डालो and trust the investment manager to do their. हाँ. वो trust बन जाता है या उसके लिए भी कुछ check करना जरूरी है? Check कीजिए कि
इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कंपनीज दे हैव इन्वेस्टेड इन, ट्रैक पहले ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हम्म। उनका टीवीपीआई क्या है, उनका डीपीआई क्या है, अच्छा कितना मनी रिटर्न क्या है। जैसे इंडिया में एक चैलेंज है कि ज्यादातर फंड्स ने कुछ भी मनी रिटर्न नहीं किया है, 13-14 साल हो गए हैं। हाँ तो आई थिंक एज फंड मैनेजर्स ऑल्सो फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिलीवर रिटर्न्स। True. So do your own research, meet multiple funds before you decide, treat it like a serious investment. And unlike a mutual fund where you can do as little as say 1,000 rupees या 500, इसमें ticket sizes बड़ी होती हैं। 25 लाख से स्टार्ट minimum, करते हो yeah, अगर आप yeah. यू नो, बट एंजल इन्वेस्टिंग तो 3-4 लाख से भी शुरू 3-4 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। या यू कैन जस्ट चेरी पिक Absolutely. अ फाउंडर और एन Absolutely. इन्वेस्टर दैट यू सेड। ओके, तो ये आपने ठीक बताया। बट अगर मेरे पास कॉर्पस है अब, आपने कहा कि मेरे पास है, मेरे को 10 करोड़, आई एम अ फैमिली हाँ। ऑफिस, राइट, तो आई कैन अगेन इन्वेस्ट। बट आप कह रहे हो जो आपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोला, हाँ, that is essentially a fund. a fund manager. You're talking about like a Sequoia ka fund या Bloom ka fund, right? So- You're talking about those? So investment manager is the person who runs the fund. अच्छा, So ultimately, a Sequoia or a Bloom doesn't manage your money. right. There are some partners there who manage your money. Oh, within them also there's an investment manager, which is Yeah. not Bloom. So Bloom तो brand name हो गया, Sequoia brand name हो गया. But it's important to get to know the people who are inside Bloom, जो आपके GPs हैं, who are managing the money. Got it. Like So, Karthik and कार्तिक हो गया, संजय हो गया, Right. अर्पित हो गए. yeah. There are some very very incredible investors out there. तो आप समझिए कि उनकी थीसिस क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, when do they take an exit, what is their exit strategy, who are the other LPs. Yeah. Sure. अभी आपको कैसा लग रहा है इंडिया का सेंटिमेंट? बिकॉज ऑन वन हैंड स्टार्टअप्स बहुत सारे बन रहे हैं, शार्क टैंक चल रहा है, ऑन द अदर हैंड कुछ लार्ज स्टार्टअप्स में देयर आर सम कॉन्वर्सेशंस आल्सो, यू नो, व्हिच आर नॉट द बेस्ट, राइट? देयर हैव बीन सम डिबैकल्स आल्सो, राइट? So where do you see how an outside person who's wanting to invest gets that confidence? कि यार मतलब I to keep seeing a lot of negative news also on startup ecosystem today. How do I build that confidence? मतलब is this the right time for me or should I wait? देखिए, India is the story for the next 400-500 maybe 1,000 years. That's how I'm very long on India. So मुझे लगता है कि a few rotten apples are there in startups. Similarly funds में भी हैं, similarly large companies में भी हैं. होता क्या है कि because startup is the mood of the nation, हमें थोड़ी disproportionate coverage मिलती है अगर इस सेक्टर में कुछ गलत होता है. Don't let that cloud your judgment. खाली वो मत देखिए, ये भी देखिए कि कितनी अमेजिंग कंपनीज बन रही हैं. There are times you will get it wrong. Yeah. If you do your work carefully, more and more you'll be right. So don't let this noise. Yeah. हम फिजिक्स में बोलते हैं एक नॉइज को फिल्टर करना सीखिए. That's right. तो फिल्टर द नॉइज, focus on first principle thinking, and hopefully you will have a amazingly enjoyable experience of wealth creation and knowledge creation. Awesome. आपने एक दो टर्म्स यूज करे थे अभी, DVPI, TPI. Can you kind of, because again this is almost like a master class for me. 2-3 टर्म्स जो ये हैं और इनका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझाएंगे for everyone's benefit. Sure. If you leave out the terms, basically क्या होता है, आप एक पैसे दे रहे हैं, so say आपने एक फंड में 1 करोड़ रुपए लगाया. फंड की लाइफ टिपिकली 7 years होती है और कुछ फंड्स को एक्सटेंशन मिलता है, एक +1+1. They take your approval and SEBI's approval and get an extension. Right. आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप एक फंड में इसलिए डाल रहे हो because your expectation is they will beat the market return. Market return could be the return you get from FD or corporate bond or debt, or it could be simple like it will beat the Sensex. So if you had invested in Nifty 50 and Nifty 50 would have given you a 13-14% IRR every year, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि hopefully रिस्कियर एसेट है स्टार्टअप, तो रिटर्न उससे बेटर आनी चाहिए. रिटर्न 2 तरह की हो सकती है. एक नोशनल रिटर्न हो सकती है
कि आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए थे, हमने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, अब उस एसेट की वैल्यू 5 करोड़ हो गई है, बिकॉज हमारे बाद दूसरे इन्वेस्टर्स आए जिप में, उन लोगों ने स्टार्टअप का वैल्यूएशन हायर किया, तो हमने 1 करोड़ डाला था 100 करोड़ के वैल्यू पे, आज जिप 1000 करोड़ के वैल्यूएशन पे है, तो आपका 1 करोड़ 10 करोड़ हो गया है। अगर आज हम बेचने जाएं और कोई खरीदार मिल जाए, तो ये एक नोशनल मार्कअप है। यस, तो एक ये पैरामीटर है कि अभी आपका बुक वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड इन विच द फंड इज इन्वेस्टेड, बेसिकली वैल्यूएशन कितना है, वैल्यूएशन कितनी है आपके एसेट्स की। दूसरा होता है डीपीआई, ओके, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है। अगर आपने 1 करोड़ दिया था और आज उसकी 10 करोड़ वैल्यू है, आपको कितना मिला? हैज द फंड गिवन यू 3 करोड़ ऑफ कैश? ओके, तो आपको एग्जिट 3x अब डीपीआई मिल गया। अदरवाइज ये पेपर और नोशनल गेम है। सो आई थिंक आपको दोनों चीज देखना होता है कि ओ टोटल मार्कअप कितना है, अब आपका बुक वैल्यू क्या है और आपको ये भी देखना होता है कि डीपीआई क्या है, पैसे हाथ में कितने आए। मेक सेंस, अंडरस्टूड, वेरी क्लियर। शार्क टैंक का क्या लग रहा है आपको? इज दैट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? Anything that you want to talk about? Do you watch it, by the way? Right? What are the conversations that you hear about it? Any startups or sharks that you want to share? So I don't watch it. I like reading, and I read on Twitter. I read on Kindle. I don't watch TV a lot. If I do, I watch documentaries, biographies, or how things work. Nice. So you would catch me watching a documentary or a YouTube series on Hawthorne Collider. Oh. Or, other such geeky stuff. Nice. I don't watch Shark Tank. Yeah. But there is immense value in Shark Tank. My grandmother is 92. She watches Shark Tank. Wow. A 13-year-old child is watching Shark Tank and getting inspired. So Shark Tank has taken a exotic, esoteric asset class and made it very relatable to people. Yeah. Which is very, very important because the tolerance for failure is going up. Yeah. जब आप शार्क टैंक में जाते हैं और 3-4 शार्क्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ फाउंडर्स नहीं आंसर कर पाते हैं, the tolerance for failure is going up. Yeah, that's true. Even they are celebrated. Even they become micro celebrities. Oh, everyone. Yeah. So I think इंडिया और हम लोग सब के लिए एज इंडियंस शार्क टैंक समझा रहा है कि इट इज ओके टू ट्राई। इनफैक्ट मोर देन ओके, वी सैल्यूट यू, वी क्लैप फॉर यू बिकॉज यू ट्राइड। वेदर यू रेज मनी और नॉट इज इमैटेरियल, बट वो जो आपको 7-10 मिनट मिलते हैं शार्क टैंक पे, दैट एडवर्टाइजिंग टाइम इटसेल्फ इज वर्थ 15 करोड़। Yeah, that's true. तो यू बिकम अ मिनी नेशनल फिगर। तो शार्क टैंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में। इट इज वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी अमेजिंग फाउंडर्स हु बिल्ड लार्ज कंपनीज टेक आउट टाइम टू गिव फीडबैक। और आप ये सोचिए, वो फीडबैक 4 या 5 शार्क्स मिलके एक कंपनी को नहीं दे रहे हैं, वो 40 करोड़ इंडियंस को देख रहे हैं जो शार्क टैंक देख रहे हैं। सो इमेजिन, आपने कैक के बारे में कुछ डिस्कशन किया, आर्गुमेंट की, 40 करोड़ लोगों को आपने कितने फ्यूचर एट स्केल समझाया, सीख रहे हैं कि कैक के बारे में क्या सोचते हैं। तो शार्क टैंक फॉर मी इज अ वेरी स्केल्ड वे ऑफ रनिंग अ मैसिव ऑनलाइन कोर्स टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। वेरी नाइस, ग्रेट। सो आई थिंक पहले क्रिकेट था, बॉलीवुड, और अब शायद स्टार्टअप्स। Religion, politics and startups. Yeah. I think that's India for us now. Yeah, that's amazing. एक बात बताइए, आप almost every networking event that I go to, Apurv is there. How are you omnipresent and how do you manage so many events? And what is your networking mantra for people who are watching us? मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ।
4 अपूर्व हैं. You're like that Ori, huh? I have body quadruples. Oh. No, I think on a more serious note, people like you and me who are in the ecosystem have the privilege and opportunity for being invited to 2 or 3 events, maybe at times 4 events a day. Yeah. So possible नहीं है. कुछ लोग मायूस भी होते हैं when we can't attend their event. We want to support as many people as possible. I'm here because very fond of Akash and Rashi who are building Zip. If you like something, if you want to hang around with people, effort मारना पड़ता है. It's never easy. At times you're tired, you're unwell, but you have a commitment. You have to show up. Wow. You have to show up. If you don't show up, people will not show up for you. Yeah, that's also true. And I genuinely enjoy working with people, meeting people, learning about them, learning their life journeys. Now I try to be very mindful. Over time, you start understanding which is the event worth going to. Yeah. Some events you go to learn, some events you go to give back. Yeah. And then a sweet spot is if there is an intersection. Correct. Yeah. But something you get out of those events. I think कुछ ना कुछ energy तो निकलती है. Absolutely. Yeah. अगर मैं एक इवेंट में गया, मैं और आकाश मिले थे. हम फ्लाइट से मैं आकाश और 2-3 फाउंडर सूरत गए साथ में. Yeah. कुछ नहीं, पूरे रास्ते हम बात कर रहे थे. हम एक दूसरे के बारे में, बिजनेस के बारे में समझ रहे थे, फैमिलीज के बारे में. True. ये जो 1 घंटा मिला फ्लाइट पे जब सबका फोन बंद था, ये अगर आप इवेंट पे नहीं जा रहे होते कैसे मिलता? सही बात है. So everything has some flavor which you get back, which you get back, right? But ये जो youngster है ना, उनको अभी भी networking, जैसे मैं था, when I was even till my college days, or even during my job, even starting Zip, पहले 2-3 साल मुझे networking नहीं पता थी क्या होती है. Maybe since you are, according to me, a power networker, let me call you that. What are the couple of things that you want to tell people कि networking है क्या, या फिर एक youngster को कैसे शुरू करना है, क्या करना है एक event में जाके? So I think when you go to an event, you will know some people or you will not know anybody. Yeah. Look around the room. Somebody will smile at you. Somebody will look at you curiously. Walk up to them and introduce yourself. And say, hey, मैं किसी को यहाँ जानता नहीं हूँ. This is what I do. Would love to know more about you. आराम से कीजिए, बेझक कीजिए. जैसे जैसे करेंगे आपका सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट कम होगा. You will start with a party or an event where you don't know anybody, and maybe in 10 years you will end at an event where there is nobody you don't know. Yeah. सोचो ना, मतलब मैं आपसे मिला था मुंबई में when you came to give a talk. I was one of those listeners, early stage founder, learning a lot actually from your journey and what happens in startups, कैसे आगे बढ़ाना है, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स होती है. और फिर मैंने आपसे बात करी थी छोटी सी. आपने कहा था यार जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, आगे बढ़ो. And today you're sitting here on a podcast, we chat, you're a call away. Absolutely. This is how I think. And so are you, Akash. I find you phenomenal in the way you're prompt, responsive. Thank you, Chief. I think you're learning from the seniors, right? And it's very important for us to learn. तो आपने कोई किताब भी लिखी है, मेरे को सुनने में आया. Yeah, can you talk a little bit about it? What is that book about? So, over time, when you do a lot of things, कुछ सीख जाते हो. Yeah. थोड़ी एक्सपर्टीज आ जाती है किसी चीज में भी. तो डिजिटल मार्केटिंग, ग्रोथ में एक्सपर्टीज आ गई. तो लोग बुलाने लगे कि आप मेरी टीम से बात करो, बताओ कैसे स्केल कर सकते हैं बिजनेस, फ्रूगली कैसे कर सकते हैं. कुछ लोग फिर उसी की सोशल मीडिया पोस्ट बनाने लग गए. वाओ, जो आप सिखा रहे थे. हाँ, क्या बात है. तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजने लग गए. तो फिर ऐसा होने लगा कि मैं कहीं सेशन पे जाता तो मुझे लगता है ये सुना हुआ लग रहा है. फिर लगता कि अरे ये तो मैंने ही बोला था.
That's amazing. तो किसी ने बोला कि आप सबको कंपाइल करके एक बुक क्यों नहीं लिख देते? अरे वाह. तो पहली बुक मैंने पूरी फ्लाइट पे लिखी 2016 में, 2014 से 16 के बीच में, ओवर मेनी फ्लाइट्स. क्या बात है. और पूरी बुक फोन पे लिखी. Amazing. क्योंकि लैपटॉप ऊपर होता था, उसको निकालो, बूट करो. हाँ. लैपटॉप पे काम करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए. Right. बिकॉज पहले माइक्रोसॉफ्ट होता था, बूट करो, हाँ. खुलता था, बूट होता था, सही वैसे बात है. चलता था. Correct. तो उतना पेशेंस नहीं होता था. हाँ. अब फ्लाइट पे गए, अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डाला हाँ. और लिखना चालू किया नोटपैड पे. Right. तो 90,000 वर्ड्स ओवर क्लोज टू 600-700 फ्लाइट्स लिखी और फिर उसको एडिट किया. Wow. ये अच्छा आइडिया. टाइम मिल जाता है, फ्लाइट के वेट कर रहे होते हैं. हाँ. फोन पे लिखना. तो पहली बुक लिखी, इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड. आवर डियर प्राइम मिनिस्टर आल्सो रोट अ वेरी एनकरेजिंग लेटर, Oh wow. जो मैंने ट्विटर में भी पिन किया हुआ है. Superb. फिर दूसरी बुक लिखी, मास्टर ग्रोथ हैकिंग, जो पेंगुइन ने पब्लिश की. वो ऐसे ही थी, फाउंडर्स के साथ काम कर रहा था, सीख रहा था, इंटरव्यूज कर रहा था. तो मैंने बोला यार, इतने फाउंडर्स की इतनी कहानियां हैं, कैसे ग्रो किया, जिप ने कैसे ग्रो किया, जोमैटो ने कैसे ग्रो किया, पॉलिसी बाजार ने कैसे ग्रो किया, इन शॉर्ट्स ने कैसे ग्रो किया. सबकी बेस्ट लर्निंग्स निकाल के एक प्लेबुक बनाते हैं ग्रोथ हैकिंग पे. Wow. फॉर इंडिया, बाय इंडिया. Amazing. यूएस के टेम्पलेट इंडिया में नहीं चल रहे हैं. नहीं चलते. वो वो बेस्ट सेलर हो गई. पहले सॉफ्ट कॉपी आई, फिर हार्ड कॉपी आई. बहुत हजारों लोगों ने लिखा. छोटे फाउंडर्स, फंडेड फाउंडर, बड़े फाउंडर, कंज्यूमर इंटरनेट फाउंडर, डीटीसी फाउंडर, लॉजिस्टिक्स फाउंडर. क्या बात है. तो जो विथ ऑल ह्यूमिलिटी जो ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि ये बुक किसी को मदद कर पाए, दैट वाज अ इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. Wow. Wow, I'm sure a lot of listeners would hang on to this book now very, very quickly. Growth hacking is so important and so multiple strategies that you have learned. आपने IMI से MBA किया, आप बिहार से हो, and then you also went to Harvard. Yes. Right? I think मेरा सवाल ये है कि are these colleges or degrees important for a new young startup founder? How much do they help? I think any kind of education helps. Education can be in a formal setting at Harvard or IIT Delhi or IMI, or education can be what you gain by building things. Yeah. I think जब आप थोड़ा educated होते हो, आपने MBA कुछ किया होता है, तो आपको basics पता होते हैं. Finance, accounting, marketing, it does help. Okay. You have a network, you have alumni you can reach out to. Out of इतने pitches जो investors को आते हैं, जब आपका pitch आता है तो आप बोलते हो इस college से, तो थोड़ा सा differentiated होता है. That said, there are rules, there are dropouts who build. Yeah. But Howard. But important thing is, even if you're a dropout, where did you drop out from? Yeah, that's very important. ये नहीं कि drop out कर लो, college का नाम किसी को नहीं. तो जो लोग बोलते हैं कि मैंने college नहीं किया, ये time successful, I dropped out. I think they should also introspect कि आप लाइफ भर आप बोलते हो कि मैंने IIT ड्रॉप आउट किया या हार्वर्ड ड्रॉप आउट किया या IIM ड्रॉप आउट किया, तो वो कॉलेज का नाम तो अभी भी यूज कर रहे हो. हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट व्हिच पीपल मिस. लोग सोचते हैं कॉलेज का नाम के बिना ड्रॉप आउट की कोई वैल्यू नहीं है. मैंने ड्रॉप आउट किया, किससे किया? वो बस. दैट्स गुड. आपको कभी कोई ऐसी एडवाइस मिली है लाइफ में व्हिच हैज बीन पिवटल फॉर यू, एंड इफ यू कैन शेयर पर्सनल एडवाइस. So one advice which I always follow and I try to follow and learn from is when you have to choose between being kind and being clever, always choose being kind. Yeah, makes sense. I always feel कि the journey is not are you creating more wealth next day, next week, next year. The deeper journey is are you being a better person next year. Wow.
are you being a better person next hour, next week? Hmm. So personally for me, my self journey is about being a better person, about leaving the world a better place than we found it, about Hmm. helping people. Hmm. I think since you've also spent a lot of time in Google, right? What is it in Google that everyone in Google is driven, is almost like an entrepreneur? Yeah. क्या मतलब वो ऐसा क्या ट्रेड गूगल का है जो ये सब बनाता है लोगों को? So Google के 3 वैल्यूज है. So पहला है रिस्पेक्ट द यूजर. ओके. यूजर का डेटा को रिस्पेक्ट कीजिए, यूजर को रिस्पेक्ट कीजिए. दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ यूजर सेंट्रिसिटी. किसी भी फाउंडर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप यूजर ऑब्सेस्ड हो. या. किसी भी टीम में हो, आप लीगल, फाइनेंस, सेल्स, ऑपरेशंस, एचआर, योर यूजर्स आर योर एम्प्लॉइज एंड देन योर यूजर्स आर आल्सो योर कंज्यूमर्स. या. सेकंड हम गूगल में बोलते हैं रिस्पेक्ट ईच अदर. सो काम करो, चैलेंज ईच अदर, बट सब कुछ रिस्पेक्टफुली करो. बी ए बेटर पर्सन. लास्ट बोलते हैं रिस्पेक्ट द अपॉर्चुनिटी. आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी है. आर यू ब्रिंगिंग योर ए गेम? आर यू डूइंग एवरीथिंग यू कैन टू मैक्सिमाइज द आउटकम, द इम्पैक्ट? सो ये 3 पिलर्स हैं which is very core to being a Googler. Okay. Yeah. That's great. Yeah, I think ये मैंने देखा है, large organizations are built on a few pillars. Yes. And like Airtel was similar for me. I would love to know आपके Zip के 2-3 values क्या है? Oh yeah. So Zip में we have 5 values, right? So and these are almost like our firing decisions in that sense, right? So people who think product first, क्योंकि startup है, बिना technology product के सोच ही नहीं पाएंगे, तो हम उनका थोड़ा वो check करते हैं, right? I think for us it's very important to have execution excellence, right? तो हम उसका बंदे का देखते हैं, उसने कुछ actually मैं यही पूछता हूँ straight away, उखाड़ा है लाइफ में, बताओ क्या है? right? That is most important for me, right? क्योंकि हमारा बहुत सारा काम राइडर्स के साथ होता है, डिलीवरी पार्टनर्स. That's one of the trade that we built as they come into the system, rider first. Yeah. उसका ध्यान रखना है. वो हमारा कस्टमर है, अगर वो कमाएगा तो हम कमाएंगे. Superb. Right? Beyond the basics एक बहुत इंपॉर्टेंट हम सोचते हैं कि यार नॉर्मल लाइन पे तो चलने वाले लोग बहुत हैं, क्या तुमने ऐसे करके कुछ किया लाइफ में, वो टफ वर्क किया, राइट? Very nice. Yeah. So these are a few, and integrity obviously. Very nice. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका Super important that you have integrity as a value. Yeah. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक वो उसके बिना तो फिर काम ही खराब हो जाता है, राइट? नो, आई थिंक दिस इज सुपर वैल्यूएबल. एनी बुक, सिंस यू आर एन एविड रीडर, राइट, आई वुड लव टू नो अ कपल ऑफ बुक्स दैट पॉसिबली 2 sides of books. One maybe for founders, one possibly if there's a book for people who want to start investing. Anything that you want to guide them, कि कोई ऐसी स्टार्टअप की कहानी पढ़ लें कि वो एंजल इन्वेस्टर बन जाए. आज मैं तो ये चाहता हूँ. एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं. So Power Law is a great book to read on investing. Intelligent Investor by Ben Graham is a great book. Wow. So you can read some of these books. Startups तो बहुत सारी बुक्स हैं. स्टार्टअप्स के बारे में हमने बहुत बात कर ली है. लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट. यस. टिम फेरिस की एक बुक है, टूल्स ऑफ टाइटन्स. ओके. तो टिम फेरिस ने, अमेरिकन ऑथर हैं, थिंकर हैं, 100 सुपर परफॉर्मर्स को इंटरव्यू किया. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को, किसी टॉप म्यूजिशियन को, किसी टॉप फाउंडर को, और पूछा आपकी डेली हैबिट्स क्या हैं व्हिच मेक यू दिस इनक्रेडिबल परफॉर्मर. वाओ. सो द बुक इज कॉल्ड टूल्स ऑफ द टाइटन्स. वाओ. If you are a titan, you are a legend in your field, what are the tools you use to become who you are? Wow. I find that book incredible. उसको पढ़ के अगर आप कुछ भी जो आपके लिए वर्क करता है यूज कर सकते हो. आप फाउंडर के आप कुछ भी बन सकते हो. That's amazing. That is amazing, right? Be the founder of the life you want to live. Yeah. And which is what you are in a way, right? You are the founder of a life that you are wanting to live. You're investing in startups. You're helping startups. You are, building funds around you. You are working in a large, setup. I think a lot of people would envy your journey, right? Any reflection points on your journey की सबसे बड़ा movement क्या था आपकी journey का? मतलब जिसने बचपन में या फिर job में या फिर investing में जिसने आपको, सबसे ज़्यादा move किया हो? Any of that moment that you would want to share? Too many.
So from seeing a founder where I'd invested, who also became a close friend, going through a mental breakdown, that taught me the importance of supporting not only founders, everybody around their mental well-being, taking care of themselves. बहुत सारे ऐसे moments होते हैं लाइफ में. I think the important thing is to learn from it, draw a line and move ahead. Okay. Every moment is either a learning moment or a earning moment. Yeah. Oh, that's interesting. Last question. Yes. Stress के बारे में बात करना चाहूँगा. हाँ. I think you interact with so many founders and there's so much stress. Yeah. There's so much, mental breakdown that you're talking about, which is happening around us. I have seen now a couple of founders had heart attacks also, right? Yes. How do you suggest that how one can balance it out? What is the way? Is there something? You seem to be very calm, and which is why I'm asking you this question. How to kind of become that, how to balance it out. So I think you need to identify what causes stress, patterns, situations, people. Remove yourself from it. Get out of your body, remove yourself from it, and look down at that situation. And see what happened. How did you react? जो होने वाला है, जो हो रहा है, there is very little you can do to change it. Yeah. The only thing is in your control is how do you react? How do you respond? Right. Can you respond more positively? Can you react more positively? The second thing is, today is bad. Tomorrow is going to be a great day. Correct. This moment is bad. That's fine. But this moment. It's now. Yeah. It doesn't mean your whole life, whole situation. Relax. Everything is going to be fine. Yeah. Third, whatever gives you joy. It could be playing cricket. It could be running. It could be going for a walk. It could be listening to a podcast. Yeah. It could be playing with your children. It could be talking to your parents. Yeah. Find a passion. And this passion necessarily has to be outside your startup and work. If 100% of your passion is only Zip or only whatever company you're building, you have a single point of failure. All your emotional, physical, mental well-being is tied to a single point of failure. Yeah. There is no MCB. So जब short circuit होगा उसमें, you will not know what hit you. And there is a chance, even with the best intentions, hardest work, things do go wrong. That time you need a second point of failure where you can extract yourself from this situation and be around people or situations or places where nobody is judging you. People are putting an arm around you and saying, Akash, छोड़ वो. कल फिर सूरज निकलेगा. कल फिर अमेजिंग डे होगा. जो हो गया कोई बात नहीं. Nice. You need that. Yeah. Single point of failure tolerance leads to stress. Absolutely. Single point of failure could be your job. It could be your relationship. इतना ज़्यादा मत घुसो उसमें. Have घुसो, पूरा घुसो. हाँ. But have multiple points. Yeah. Have a de-stressing team. बैडमिंटन खेलो, run करो, walk करो, बच्चों को पढ़ाओ. True. Somebody enjoys cooking, वो करो, book पढ़ो. True. When I read a book, I escape. You need that escape. Yeah. Otherwise, हम इतना as a investors, as founders, हर moment में we are giving 200%. True. जब आप इतना intensely 24 घंटे इतने साल से कर रहे हो, and you have no respite. Yeah. True. So, lastly, be kind to yourself. Yeah. That's true. People who are founders are typically overachievers, who are investors are overachievers. We often start believing the narrative which people build around us. अब जैसे आकाश ने मुझे बोला आप हर इवेंट में होते हो, पावर नेटवर्कर हो.
Imagine if I start believing that about me and I allow that to create pressure on me. Yeah. किसी ने बोला आप youngest unicorn founder हो आकाश को, आपने इतने साल में unicorn बना लिया. And imagine he lets that others perception become his reality. उस टैग से कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है. सही बात है. Don't let others perception, labels drive your behavior. Yeah. सुनो सबका, be humble, be You grounded, have focus on your game, whatever your Have game focus is. on Yeah, yeah. and be kind And be to kind. yourself. Be kind. I think you've said it a lot. So on that note, on that amazing note, I think I'd like to thank Apurv to be on our podcast, share so much wealth of knowledge. Amazing journey, and I'm so much inspired. I think this is the first time that I got to know you as a person, and so good to know you. Yeah. Pleasure to be here, Yeah. Akash, at the amazing new Zip office. And we want everybody to be zipping Yes. and you to create a lot of employment for riders. Thank you so much, Chief. This is just the beginning. देश को हरा बनाएंगे. Thank To you. all the viewers out of there, हम काश से आकाश जाने वाले हैं. Absolutely, Chief. Thank you so much. Thank you.